डिज़ाइनिंग ऑफ ग्रीन हाउस में, जो बात इनॉग्रल में भी हो रही थी कि अगर आप इनिशिएट करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं ग्रीन हाउस कल्टिवेशन में, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है स्ट्रक्चर। इसका बनाएंगे कैसे? आपको खुद तो नहीं बनाना है, बट आपको ये नो हाउ होना चाहिए कि जिसको आप ऑर्डर दे रहे हो बनाने के लिए वो उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। तो उस वजह से हमने एक ये भी रखा हुआ था इसमें कि डिज़ाइनिंग के बारे में, पॉली हाउस की डिज़ाइनिंग के बारे में हमने अपने एक्सपर्ट डॉक्टर जुनैद साहब को बुलाया हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा समझिए कि एक इंटरेक्शन सेशन जैसे पिछला हमारा रहा, आपने इंटरेक्ट किया, वैसे ही आई होप कि इसमें भी आप इंटरेक्ट करेंगे। Very much, Faheema ma'am. Very good afternoon to all of you. So my name is Dr.Junaid, as you can see on the board. So I'm basically dealing as Professor and Head, Division of Soil and Water Conservation Engineering. And the topic that I'm going to discuss with you is about design of greenhouses. So basically, when we talk about greenhouses, especially for our region, that is the temperate region. So the technology is totally different from tropical and subtropical area, or the arid or semi-arid area. So first of all, I just want to see if you can see this building. अगर आप ये building देख रहे हैं ना, so this has been, I think, almost in 82-83. This building has been envisaged to build this building. And that time, Kadri Consultant was one of the famous architects. He had his office in Bombay. I think a very famous man. He had an office. That time they say that जितना ये कमरा है उतना उसका टेबल होता था वहाँ पे. And big people used to come to him and he used to give design of a building, how to develop a building, how to design a building. But he has given the architect for this building. But those people who have worked in this building, अगर आप उनसे पूछेंगे ना, this is a total failure, this building. जिसने यहाँ पे काम किया है, because number one is that he didn't have that experience कि हमारे एरिया में यहाँ पे snow load रहता है. So when he developed the building, he developed it on the basis of standards of जो वहाँ पे ट्रॉपिकल के हिसाब से है, जहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता है, या जो इसने वेंटिलेशन दी है इसमें, तो इसमें आप देखेंगे कि जो वेंटिलेशन है पूरे जो हमारे जो गर्म इलाके हैं उनके हिसाब से उन्होंने वेंटिलेशन दी है. So that way it has a, this building has a total flaw. The same is the case with greenhouses. Greenhouses में भी exactly same है. जो यहाँ पे हमें greenhouses चाहिए, they are totally different from the greenhouses that we will be having in temperate or in a cold air region. तो क्या चीज़ है? What is the difference? अभी मैं बताऊँगा. मैंने एक ग्रीन हाउस देखा तो उसमें क्या हो रहा था that it has a, this is known as a ridge. जैसे घर में होते हैं ना, हमारे छत होते हैं. It is a ridge. We call it a ridge. If you make it flatter, that means slope is decreasing. If you make it more, that means slope is increasing. तो जितना ज़्यादा हमारा span हो जाएगा उसका, the more we increase the span of the greenhouse, तो उतना ज़्यादा लोड आ जाएगा स्नो को नीचे उतरने में. So that is the design aspect of it. So we have to see that कि जो स्लोप हम दे रहे हैं that is appropriate, कि स्नो लोड उस पर नहीं आ जाएगी. तो उसमें क्या हो रहा था उस ग्रीन हाउस में, that is snow used to come, it would, अगर वो उसका जो span था that was 13 meters, halfway it used to come and it used to stay on that place. उसके बाद वो नीचे नहीं उतरता वहीं पे. And with the passage of second winter, that whole structure crumbled. कम से कम 70-80 लाख का इन्वेस्टमेंट है. I think many of you are from the agriculture department. वहाँ पे भी आज HADP में बड़े-बड़े green houses बन रहे हैं. And unless and until you don't have the proper design for these, so you are not going to have a right kind of a structure. So that is the basic thing I want to tell you. Another thing is that a few years back, 3-4 years back, Prime Minister Narendra Modi ji, he went to Central Asia. तो वहाँ पे उनको ग्रीन हाउसेज बनाने थे. यू नो दैट ओवर क्लाइमेट, ओवर कंडीशंस आर वेरी सिमिलर. वो सारा एरिया आप ले लेंगे, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज इन दैट एरिया एंड दे डोंट हैव, लाइक आई थिंक वी आर मच अहेड इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी जो है. सो इफ वी डेवलप समथिंग हियर, इट हैज अ होल मार्केट इन दैट एरिया. चाइना में भी इसका मार्केट है, उस सारे एरिया में मार्केट है. बट व्हाट वी नीड इज प्रेजेंटली इज दैट we should have a structure which is well designed
which can cope to certain things, certain जैसे कुछ चीजें हैं जो कि हमें चाहिए इसके लिए. So I will tell you just a simple story. Some 10-15 years back, we started a greenhouse fabrication unit over here. यहाँ पे हमने एक structure शुरू कर दिया. तो वहाँ पे what we used to do is that we used to fabricate greenhouses. And that was a simple commercial thing we did. And each year as profit we used to earn 50 lakhs per year as profit in that. तो कहने का आपका यही है कि there is a lot of potential for all of the people who want to work in this. और ये बहुत vast field है. Like you will see in my presentation that it is a very vast field जो हम इसमें discuss करेंगे. So I am going to discuss. यही है So there are two things to it. One is the historical perspective of this protected cultivation, and second is the future में क्या हो सकता है. That is what I want to convey you. As you can see from the figure, this is the figure of on the left hand side. As you can see, it is the hanging garden of Babylon. So it was again कम से कम 600 in 600 BC is the estimated time that when it was built, and crops were grown hydroponically in it. That means instead of using the soil as a medium, they used to use water for growing of the crops in this. So written record is that at that particular point of time, we had this kind of a structure. And also there are these Aztecs, they used to go for these rafts. Like in our place, we also have floating gardens that are known as rads. Dal mein jo hai, they are also used for growing vegetables. So there is already a concept of protected cultivation is there. Next. So this is, you can see this is Roman Emperor Tiberius. So he says he was a very short-tempered person, this emperor. And once a doctor told him that he should have a fresh cucumber daily to eat. Otherwise he would have some medical problem with him. तो इसने क्या किया? He selected some 10 persons. आप में से 10 लोगों को select किया. And he said that I want a fresh cucumber each day. And वहाँ पे अगर आप climate बात करेंगे रोम की उस टाइम पे, that was a temperate kind of a climate. That means they had summer, winter, autumn and so on. So what he did, he asked them, summer में तो ठीक है, they could do it, but in winter it was not possible. तो उन्होंने उस टाइम पे, because he said if you are not successful I am going to kill all of you. So they have to come up with some solution for that. So what they did is that they constructed a kind of a structure, a cart. उसमें उन्होंने मतलब plants grow किए, and they used to take it out during this winter times. They used to bring it inside and used to cover it. उस टाइम पे glass भी नहीं था when that thing is happening. So they used to cover it with plaster of Paris के thin sheets उन्होंने बनाए, उससे cover करते थे, room को गर्म करते थे stones के साथ, so as to increase the temperature of that room. But by this they were successful in growing of cucumbers daily on the daily basis. So when you have that kind of आपके पास वो ना what we call it इच्छा शक्ति होती है, you can do these kind of things. And you can see this is another, this is in Kew Garden, this is in England, Liverpool. Exactly the technology that was used to build the ships, they built this glass house there. तो उस टाइम पे उन्होंने वो glass house वहाँ पे बनाया, and it has a climate
exactly equal to a tropical kind of a climate in England, although it is a temperate kind of climate we have there. And all kinds of rainforest trees we can find at that place. And you can see this, another figure I am sharing with you, this is the Roman Empire. And that time also they had this kind of structures for growing of plants under these controlled conditions. Next. So, this I was talking about the past, what we used to think in the past. So now we are talking about the future, because now we say we are talking about climate change. There are so many problems. If I am going to count, so there are so many problems with this. So what will be the future like? Like there will be biodome mega farms. So there will be big control structures. No weather constraints will be there. Year-round production will be there. Diverse production will be in these structures. And this is superfoods, and this. And another thing is that is the vertical farming. That we don't have that land available where we can grow crops in a horizontal manner. We will have to grow it in the vertical manner. So this is the future for us. And these protected cultivation, the kind of the situation that we have. So this is a very important criteria that is going to play a very important role in it. Next. So if you see that the key problems that we are facing, most of you know that daily it comes on the paper also, and people are expressing their concern about it, that land is shrinking. अगर आप पामपोर एरिया की बात करेंगे, आप देखेंगे कि आज से 20-30 साल पहले कितना एरिया था ऑन फॉर सैफरन कल्टिवेशन और आज की डेट में कितना है. And if you see the statistics, this is from the paper we have taken, about 78,700 hectares we have lost as arable land, cultivable land in the last 4 years. आज तो इससे कम होगा. And on the other hand, these are the projections that from 1.3 crore the population is going to be 4.6 crores. And if you have to feed so many people, and with the limited land resources you have, one of the big tools that we have with us, that is the protected cultivation that we are discussing over here. Next. So you can see that extremely cold weather we have, uncertainty, all these things, you can just read it out. Now I want your attention to this slide, that you can see that, you know what is the elevation of this place, like this university? It is around 1550 meters, like you can see in this table. That means in this we have the agriculture season starting. I am saying about the outside condition. जब हम outside की बात करेंगे, from March to mid-November में हमारा agriculture season होता है. That means 8.5 months. But we are losing how many months? 3.5 months. मतलब एक साल में हम 3.5 महीने हमारे we are losing those months. We are not doing anything because of environment जो हमारा है. We are not able to tame that environment कि हम इसको use. जैसे हम लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख is an altitude of 3,000 meters. और अगर आप देखेंगे वहाँ पे जो season है, it's only 5.5 months. That means we are losing 6.5 months of season, which we could have utilized. Maybe we will have to put more resources in it, but we can use that time, because time is very essential in all this. So we can use this time for growing of crops. So that is the basic crux of this presentation. Next. So when I talk about the greenhouse, if you ask me, because many people ask whenever we say, what is the basic definition of a high-tech greenhouse? So I will start by, it is a solid structure with proper orientation. Because कई बारी होती हैं कि छोटी-छोटी चीजें हैं, they might appear very small, but they are very important. अंग्रेजी में है कि they say who is an expert. They say expert is a person who knows more and more about less and less. और कहते हैं who is a genius? A genius is a person जो छोटी चीजें हैं उनको बड़े ना बारीकी से देखता है. In depth he sees ये हमें क्या करना है. He doesn't look into the big things, छोटी चीजों में. जैसे वही छोटी चीजों में है proper orientation. Most of you must have built your own houses. आपने अपने मकान बनाए हैं. How many of you thought about what will be the orientation of my house, so that there will be maximization of sunlight in that? कितनों ने किया है? लेकिन अगर आप मुझे बताएंगे, आप I didn't do it because
Conditions are like that. We are not that, we scratch on the surface, we don't go deep into the things. So that is back. So with enhanced transmissivity of glazing material, heating system, cooling equipment, sensors, IoT based controls, with all the facilities for round the year production of crops, vegetable, fruits, with state of art equipment, devices, machines for controlling the environment inside the structure, and it should be environment friendly and cost effective. अगर किसी को कुछ पूछना है, he can stop me and we can answer it. As Dr. Faheema was also saying that it should be interactive. हाँ, थोड़ा interact कीजिए, आप बोलिए थोड़ा. I will go on speaking and you will feel bored. I don't want that also. Next. So these are the things we have to look into. Whenever we are talking about a greenhouse, on the whole, these are the important things that we are talking about. The first is the strength of the structure. Whenever we are building any structure, it should be resistant to snowfall. जैसे snowfall कितना हो रहा है, whether it should bear a load of 75 kg per meter square, 100 kg per meter square, 150 kg per meter square, and what is the orientation. We'll be discussing that in detail. What should be the temperature inside the greenhouse, what should be the humidity. Like I was showing you the greenhouse in Liverpool, जो मैंने दिखाया था आपको, that is based on the ship. तो उसका जो temperature है, even in winter when it is minus outside, it is almost 18 degrees in that greenhouse. That's why they are able to maintain that kind of environment in that climate. Then it is the light intensity, solar radiation transmissivity, energy consumption. This is very important. मैं आपको बोलूँगा कि supposing I have a greenhouse, I have built a greenhouse, तो उसमें मैं जनरेटर चला रहा हूँ या डीजल उसमें चल रहा है, and then I am growing, उसके अंदर I am growing, say kale I am growing in that, उसमें grow हो रहा है. So unless and until we don't have that economics, so this all thing is, ये वो तो नहीं चलेगा ना, unless and until we don't have that economics. I had a friend, वो उसकी बहुत बड़ी कंपनी है, has a turnover of $1 billion. उसकी कंपनी का नाम है Cravo. You must have heard about it. So he told me that I told him I want a kind of a structure that is going to give me the vegetables round the year. He said we don't do it even in this Canada also. बोला वहाँ भी नहीं हम करते हैं, हम it will be cheaper for us to import it from other places. यार हमें क्या है, अगर हमें साग 1 किलो का साग है 40 रुपए में है, तैयार होता है वो 1000 रुपए में, is this economics right? It's not right. वो उस हालात में ठीक है अगर वो मिलता ही नहीं है कहीं पे, and that is very essential for our survival. But when you have options for it, he said it's not. अगर आपको अपना ग्रीन हाउस 2-3 महीने बंद भी करना पड़ेगा, doesn't matter. बाकी 9 महीने उसको चलाओ, why you are always talking about round the year, things like that. So that is it. Next is the light intensity. Then is the solar radiation transmissivity, energy consumption, irrigation and fertigation, air ventilation, moisture availability, and so on. Next. So जो design consideration हमें देखने हैं whenever we go for design of a greenhouse under our climatic conditions. So first of all, when we are talking about conditions, we have very severe summers also as well as winters also. So there is a word in English that is known as panakia. Do you understand what is panakia? So panakia is basically, जैसे मुझे कोई भी बीमारी है, ये दूसरी भी, तो उसके लिए आप पैरास्टामोल खाओ. कुछ भी होगा मुझे, सर में दर्द होगा, टांगों में दर्द होगा, इसमें दर्द होगा, उसमें दर्द होगा, you go for a paracetamol. That means for every problem there is a single solution, but it is not possible that every problem will have a single solution. So in the same way, if we have greenhouses, different greenhouses, we cannot have a same greenhouse for all the climates. Like अगर आप बाहर देखेंगे वहाँ पे summer greenhouses अलग है, winter greenhouses अलग है. अगर आप बोलेंगे कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे कि सारा कुछ उसमें रखेंगे, तो it is not possible. अगर possible भी है, then it will not fit in the cost economics में, वो fit नहीं बैठेगा, profits उसमें सही नहीं आएंगे. ये वाला आप plain areas के लिए recommend, temperate climate means plain areas. Temperate means like over climate. We are having severe summers also and also winters we are having like that.
So when we talk about tropical, that means outside. जब हम बात करेंगे ना, जब माइनस हमारा कम होता है तो there has to be change in the design of the film. means everything you have to change. When we have such kind of a technology, जैसे summer के लिए अलग टेक्नोलॉजी है, winter के लिए अलग टेक्नोलॉजी है, अगर आप इसको combine करना है, just like we are designing a greenhouse, यहाँ से 7-8 किलोमीटर शोहामा कैंपस है, so that is being means cost उसका 3 करोड़ रुपए है for developing that. हमारा अब public institution है, we can spend that kind of money, और उतने लोग भी हम लगा सकते हैं. But if somebody has to use it as a enterprise, जैसे आप में से कई, I don't know what's your background, आप किस background से आए हैं? They want to set up, they are entrepreneurs basically. They अच्छा, want to- most of them are entrepreneurs. तो इसलिए मैंने कहा था कि I was an assistant professor. I started this greenhouse ना fabrication हमने शुरू किया था, मगर अंडर गवर्नमेंट सेटअप में हमने किया था. And for the last we have been earning 50 lakh per year in that. 50 लाख सारा खर्चा निकाल के. I am talking about the profit. कितने एरिया में है वो? मतलब we are that's a greenhouse fabrication unit. मतलब सपोजिंग आप में से कोई आया, मुझे ग्रीन हाउस बनाना है से 150 स्क्वायर मीटर का, सो वी गिव हिम दैट. ये फैब्रिकेशन ना मतलब बनाते हैं, उसमें बनाते हैं. नहीं है, ये बनाते हैं. यहाँ पे क्या होता था, पहले दिल्ली से कोई आता था फर्म वाला, वो वहाँ से आता था, यूज्ड टू ब्रिंग हिज मटेरियल फ्रॉम देयर ओनली, वहाँ से आता था, यहाँ पे ग्रीन हाउस बनाता था, वो चला जाता था. तो मुझे याद है जो हमने फर्स्ट शुरू किया, शायद आपके डिवीजन से ही हमने शुरू किया, वेजिटेबल साइंस से. दे हैड सम 4-5 लाख रुपीस फॉर ग्रीन हाउस बनाने के लिए. तो इनको फर्म वाला आ गया दिल्ली से, टेंडर भी किया उन्होंने, वो भी किया, ये किया, तो उन्होंने बोला इनको कि मैं 8 लाख रुपए आपसे लूँगा फॉर फैब्रिकेशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर. वो यहीं पे है विशाली नगर में. तो जब हमने देखा, हमने बोला दिल्ली से वो आ रहा है, अगर वो कर सकता है, वाई कांट वी डू इट. हमारे पास वर्कशॉप भी है, हमारे पास लोग भी हैं. सो इट नीडेड टू कम आउट फ्रॉम दैट कंफर्ट जोन से आपको निकलना है, देन यू हैव टू डू दैट. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी केम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन एंड वी वेयर वही ग्रीन हाउस जो कि वो 8 लाख रुपए में बना रहा था, वो हमने 3 लाख रुपए में बनाया, जस्ट फॉर 3 लाख रुपीज. 1 लाख हमें प्रॉफिट भी हो गया, एंड वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन हिम, उसके ऊपर हमें डिपेंड नहीं करना है. तो वही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो फील्ड है ना, आज से 10 साल पहले आप बात करेंगे, देयर वर 3 ग्रीन हाउस या 4 ग्रीन हाउस फर्म्स थी दिल्ली में. आज की डेट में 25-26 फर्म्स है, जो ना बड़ी बड़ी फर्म्स है जो ग्रीन हाउस बनाती है. सो जब वो सर्वाइव करते हैं, व्हाई कांट वी? एंड वो ये जो टेक्नोलॉजी है, वी कैन टेक इट टू अदर पार्ट. जैसे मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, उन्होंने बोला था कजाकिस्तान में ग्रीन हाउसेज बनाने हैं, सो दे नीडेड अ टेक्नोलॉजी फ्रॉम समवेयर, दे डिडंट फाइंड एनीवेयर. चाइना भी वो गए, वहाँ भी गए, फिर उन्होंने हमारे पास देखा कि इनके पास दे हैव लिटिल बिट ऑफ नो हाउ ऑफ डूइंग दिस. दैट वाज बिकॉज वी डिड दीज थिंग्स प्रैक्टिकली. बोलने पे तो मैं यहाँ पे बड़े बड़े भाषण दूंगा, एंड यू कैन से दैट कि ये पता नहीं क्या इसने किया है, बट व्हेन यू आर practically you can do that, then that's what counts. At the end of the day, it's what counts. And you won't believe that that was a project for 60-70 crores. 3 साल पहले की बात है. But it didn't mature because of COVID की वजह से वो नहीं हो पाया. But that is the potential we have when we have the right kind of design for this area. And it is totally different. जो वहाँ पे है, जैसे बेंगलोर में ग्रीन हाउस है, या बॉम्बे में ग्रीन हाउस है, दिल्ली में फॉर दैट मैटर, दैट टेक्नोलॉजी डजंट वर्क हियर. दिस बिल्डिंग डिडंट वर्क हियर. जिन्होंने काम किया है, दे से दिस इज ऑल. अगर आप देखेंगे यहाँ पे मतलब डैम्पनेस है, सीलन है इस बिल्डिंग में, वो स्लोप नहीं था इसमें, बिकॉज इट डिडंट वर्क ओवर क्लाइमेटिक कंडीशंस. सो दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट the temperature is high also, during winters it's low also. Then we have the snow load. I have written here that 2 feet of snow is there, but it can be more also. And also we have to, अगर जैसे मैं कह रहा था, we are going towards future. अगर हम देखेंगे past में भी कुछ activities बहुत अच्छी हुई, that we are highlighting. Future में कुछ activities हैं that are going to be highlighted. So all those things means we have to think on those lines. Next. जैसे मैं ओरिएंटेशन की बात कर रहा था, इफ यू कैन सी कि जैसे आप सन देखेंगे ना कि इट हैज अ डिफरेंट पोजीशन ड्यूरिंग समर्स
and different position during winters. जैसे आप देखेंगे summers में sun का जो होता है थोड़ा ऊपर होता है horizon में, लेकिन जब winter में थोड़ा नीचे होता है, and when it is September तो उस टाइम पे in between होता है. और अगर आप एंगल देखेंगे जून में एंगल उसका कुछ अलग होगा और दिसंबर में उसका एंगल अलग होगा. And when we have to talk about the orientation, supposing आपको बिल्डिंग बनानी है, so you can see this third figure जो वहाँ से है. So can you tell me what will be the orientation? Will it be from east to west or from north to south? कोई structure, कोई greenhouse, कोई मकान, if you have to build. So आपका जो logic कहता है कि जैसे कोई है, what should be the orientation of that? मतलब उसका length किस साइड में होगा? हाँ? North south. North south. It should be north south. Now you can say the reason क्यों? So maximum length is based on light study. You are saying in this. यही कह रहे हो ना? Now one structure is in this east and west. Another is in here, है ना? Yes sir. This is what you say. But green house में ये कैसे मैटर करेगा orientation? Because हर तरफ से कौन निकल, कहीं हर तरफ से लाइट आ सकती है. No, but it depends upon the sun. Sun जो है, sun. I showed you that sun जो है. Sun is always coming from the east. Maximum portion should face towards the sun. Maximum portion should be towards the sun. Length, So that is the logic. जो आपका length है, that should be facing Towards the sun. sun. तो जो आपका north south है, इसमें ये sun को face कर रहा है. किस direction में face करेगा फिर? It will be east and west. यहाँ पे आप जब देखेंगे sun rises from the east, it will move in this direction and set in this direction. So this we are saying this. Maximum light will be captured if the length is east to west. If the length is in the east-west direction, it will not be in the north-south direction because sun will come in this direction and it will set in this direction. Now the second thing is in that is the position of the sun. जब हम देखेंगे कि sun यहाँ पे जैसे winter में वो थोड़ा नीचे होता है, summer में थोड़ा ऊपर होता है. जब ये नीचे होता है and maximum penetration is when it is perpendicular. जब उसके ऊपर perpendicular होगा, maximum radiation will go inside. So that also we have. उसी हिसाब से हम इसका slope देते हैं. Angle of inclination of sun ray. कितना होगा कि that it will have maximum उसपे light उसमें पड़ जाए. So that is what we have. Like इसके लिए जो sunlight इसमें आती है वो पूरे green house को cover करती है. yes. जो inclination आप देते हैं. जैसे हम कोशिश करेंगे because the timing it is not a simple but what we do is that when it enters the greenhouse it should come at a right angle उसी perpendicular direction. जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ये है this is for summers it is recommended that it should be 54 degrees for winter and in summers it is only 24 degrees. तो सर जो हाई टेक होते हैं ना पॉली हाउसेस जिनमें रिट्रैक्टेबल रूफ्स होते हैं तो उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो हम चेंज कर सकते हैं विद सीजन में मतलब तो ऐसा कर सकते हैं we can do it. जैसे हम वो सोलर हीटर होते हैं ना हमारे तो उसमें वो लगा होता है नीचे ना रैक एंड पिनियन तो उसका हम कलेक्टर ना वो एंगल चेंज कर सकते हैं. we can do that is based on this principle कि हमें कोशिश करनी है we should know जैसे इस जगह का है यहाँ पे कई चीजें जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं what is the angle of inclination किस एंगल पे वो आएगा what is the angle of incidence what is the angle of declination ये चीजें जब हमें पता है then we can come up with कि हमारा जो ग्रीन हाउस है कि किस एंगल पे होना चाहिए. but these small things they matter a lot. these things आपको लगता है छोटी सी है but these things matter a lot. next अब this is just you can see that कि जैसे solar radiation जो available है जब solar radiation sun से आती है it is known as solar constant also when it just enters the atmosphere उस टाइम पे उसकी वैल्यू होती है I think it is about 1367 watt per meter square और जब वो अंदर जाती है if there are clouds if there are dust particles direct radiations they change into diffuse radiations so it is something like it shows you that like जो इक्वेटर के पास है वहाँ पे जो सोलर रेडिएशंस है वो बहुत हाई है but when it goes away from it it goes on
decrease. And also it depends on the wavelength. Wavelength क्या है like you say that जो हमारा PAR है, you understand PAR, photosynthetic active radiation. तो it starts from 400 nanometer to 700 nanometer. तो किसी प्लांट के लिए कौन सी wavelength अच्छी है, किसी कोई और है, तो that is to be taken into account. So this is for equator. अगर हम देखेंगे वहाँ पे जून में भी वही रेडिएशन है, दिसंबर में भी है. We fall in this 35 degrees to north. यहाँ पे हमारे समर में बहुत है, विंटर में बहुत कम है as compared to that. And also you can see that energy. This is the photon flux. Full sunlight we have 2000, heavy clouds 60. This is what we have under different conditions. Next. Now this is a simple greenhouse. अगर आप देखेंगे ना, ये हम बनाते हैं greenhouse. Then we have to construct a greenhouse. So some things we have to take into account. जैसे इसको हम बोलते हैं concept shape greenhouse. So when we are constructing it, we go जैसे 10वीं की क्लास में हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, we go for इसके जो diagonals हैं, they should be equal. Then we find the 4 points in that. Then afterwards we go for this side. जो साइड में हमारे लग रहे हैं, this 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको हम जोड़ते हैं. And then you will have to play with it. If you want a height of 3.2 meters, उसी हिसाब से हम इस पाइप को बेंड करते हैं. अगर आपको 4 मीटर है, उसी हिसाब से हम इसको बेंड करते हैं. So that is depending upon कि हमें पॉली हाउस किस हाइट का बनाना है, वो चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं. We can make it a, जैसे कमरे के हिसाब से we can make it 4 meters high, we can make it 3 meters height, we can make it 2.5 meters height, and also we can increase the span of the greenhouse. इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं. Depending, we can play with those things. And किसी को भी अगर शुरू करना है, if anybody wants to start it as an enterprise, he will have to start with this greenhouse, because this is one of the simplest ways by which we can construct a greenhouse. उस किस हिसाब से बना सकते हैं. Then we can cover it with either polyfilm से हम cover कर सकते हैं, polycarbonate sheet से cover कर सकते हैं, whatever is our requirement. Next. So these are different materials जो कि हम use कर सकते हैं, जैसे LDPE films है, HDPE है, PVC है, polypropylene है, PET है, LLDPE है, PS है, ETF है. So different types of films by which we can, and each film has its own property. हर किसी की advantage भी है, disadvantage भी है. मैं बताऊंगा आपको, if you take different material like glass, तो उसकी transmissibility कितनी होगी as compared to polythene जो हम यूज करते हैं. So polythene की ज़्यादा होगी कि glass की ज़्यादा होगी? Glass की ज़्यादा है. And do you know what is the transmissibility in glass? कितना जो radiations आ रही है ना sun की, कितनी अंदर जाती है? कितनी? It's more than 95%. Glass में सबसे ज़्यादा है, but it has other disadvantages. लाइक ये ब्रेकेबल है, बहुत जल्दी टूट जाता है. लेकिन हम जब पॉलीथीन की बात करेंगे वो ब्रेकेबल नहीं है, उसकी ऑल्दो कम है, इट इज 89%. सो नेक्स्ट यू कैन गो. सो दिस इज ETFE ग्रीन हाउस. दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड. तो इसकी 95% है, जो ट्रांसमिसिबिलिटी इनसाइड है, इट इज 95%. एंड देन देयर आर दीज एक्रिलिक, उनकी भी अच्छी है. देन वी गो फॉर दीज पॉलीकार्बोनेट शीट्स, FRP sheets. That so these are all lining materials that have different capacities to allow the radiation inside the greenhouse. Next. So this was also, ma'am was also saying about this retractable roof greenhouse जो मैं कह रहा था वहाँ पे हम बना रहे हैं. So वहाँ पे शोहामा में. So this is the greenhouse for 3 crore rupees, and you can see this is a technology वो जो मैं बता रहा था आपको, a technology for round the year production. Winter में भी हम we can grow vegetables in that, everything we want. Size कैसे? It is 1500 square meter. 1500 square meter means almost 3 canals of land. अभी construction में ही है, but we will take them there ना, they will have a trip. they will go there, but it has not been completed so far. तो लेकिन इसमें यही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो winter में है ना, summers में, इसका जो ऊपर वाला roof है that opens like this. मतलब क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे ग्रीन हाउस जो क्लोज्ड है, those people who are working in green houses, उसमें टेम्परेचर goes as high as 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड. तो उसमें तो क्रॉप्स ग्रो ही नहीं कर सकते.
जल जाते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन, उसके लिए सॉल्यूशन है ये। नेचुरल वेंटिलेशन आप देंगे। नेचुरल वेंटिलेशन जो आप पॉली ट्रेंच आप बता रहे हैं नो आई एम शोइंग डिफरेंट है ना ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं हमारे यहाँ पे। सर ये इसको स्ट्रिंग चेक आने आपको स्ट्रिंग चेक लगा है। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट। एट द एंड ऑफ द डे जैसे हमारा जो यहाँ पे जो हमने रिकमेंड किया है 250 माइक्रॉन्स पॉलीइथिलीन फिल्म हमें यहाँ आता है ना विनीगर का 250 माइक्रोन। विनीगर का, आई थिंक दैट इज द बेस्ट। अब है उसमें जो विनीगर का आता है उसमें ना कई चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप उसमें अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंट रखेंगे, इफ़ यू पुट इट ऑन वन साइड और इफ़ यू पुट ऑन बोथ साइड्स तो उससे उसकी जो पेनिट्रेशन है दैट डिक्रीजेस बाय 7%। बच्चों सा एंटी डस्ट, देन इट इज एंटी डस्ट, देन इट इज एंटी फॉग, एंटी मींस ड्रिपिंग होनी चाहिए उसमें, एंटी थर्मल ये होनी चाहिए। जब वो सारी चीज़ें उसमें हो जाती बिकॉज वी आर एडिंग थिंग्स इन दैट, तो उन चीज़ों का ख्याल रखना है हमें कि हमें वो वाली लेनी है कि जिसमें ना ज़्यादा वो ना हो जाए कि हमारा जो मकसद है वही उससे फोर्थ हो जाए। What we want maximum radiation inside, but when we are asking so many things that it should be ultraviolet resistant। अब ठीक है, अब कई लोग कहते हैं कि ये बाहर से भी अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंट है, अंदर से भी अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंट है, मतलब 5% ये ऊपर से भी रेडिएशन रोकता है, 5% नीचे से भी, मतलब अगर उसका 90% है इट गोज डाउन टू 80%। उसके बाद और करेगा और कुछ उसमें रहेगा एंटी डस्ट, उसके लिए उन्होंने एक और केमिकल डाला उसमें और उसका काम हो जाएगा बिकॉज वो जो टेक्नोलॉजी है दैट हैज कम ऑल फ्रॉम इजराइल। तो विनीगर की बात करें ना, उनकी सारी टेक्नोलॉजी इजराइल से आई है एंड जो इजराइल है दैट इज अ क्लाइमेट वहाँ का हॉट क्लाइमेट, डेजर्ट है, डेजर्ट टेम्परेचर गोज एज हाई एज 45 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री। तो हमारे यहाँ पे कहाँ वो यूज होगा? तो दोज थिंग्स वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। ये मैं दिखा रहा हूँ ना ऑप्शंस, लाइक ये है पोर्टेबल ग्रीन हाउसेस, इसका बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ वर्चुअली जैसे नर्सरी रेजिंग के लिए बात कर रहे थे ना, अर्ली नर्सरी रेजिंग के लिए, उसके लिए भी ये इसमें हाउ इट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मींस यू कैन, दिस इज मेड अप ऑफ द प्लास्टिक, नट बोल्ट सिस्टम, मतलब हमने इसको खोल दिया एकदम से, मतलब बांध भी दिया, ये कर दिया। जैसे समर्स में हमें नहीं चाहिए, इसका पॉलिथीन उतारना है, वी कैन जस्ट ओपन दिस पॉलिथीन इन 5-10 मिनट्स। तो दैट वे वी से पॉलिथीन। अगर हमें अब नहीं रखना है, कई लोगों से हमें नहीं रखना है, तो जस्ट ओपन इट जॉइंट्स, ये उतर जाएगा एज इजली एज दैट। जैसे पॉली ट्रेंच आप देख रहे हो, वहाँ पे लद्दाख में यूज होता है, दिस इज टेक्नोलॉजी दैट है वेरी चीप टेक्नोलॉजी। थोड़ा नीचे जाते हैं जमीन में एंड दे कवर इट विद पॉलिथीन इन दिस। नेक्स्ट, तो ये मैं जो हमारे यहाँ पे जो घर होते हैं, हमारे जो टॉप फ्लोर होता है, आजकल कल्टीवेशन शुरू हुई है हमारी, मान लीजिए तीसरी मंजिल जो जिसे हम कहते हैं, या कोई नहीं बना हुआ, यस, उसमें हम जब कल्टीवेशन अगर करेंगे, मेक ए पॉली हाउस बट यूज थर्मोप्लास्टिक शीट्स जो जी वालों की आती है या और कंपनीज की आती है, इज दैट पॉसिबल? नहीं, आपका देखना है ना पहले कि रेडिएशन वगैरह कहाँ से आएंगे। इफ यू हैव अ रूफ इन दैट, फिर नहीं ना आएंगे। रूफ नहीं, स्लैब तो ठीक है, स्लैब के ऊपर बना के रूफ इज टू बी रिप्लेस, जो हम कन्वेंशनल रूफ it is to be replaced by polycarbonate the corrugated sheets. Yes, that is very much possible, we can do it because there are lot of news are there, lot of people in Kashmir are using their slabs for cultivation of millet. Yes, we can do it। ये तो है ही है। अगर आप बाहर देखेंगे वहाँ पे हर किसी घर के, आज आपने देखा होगा ना, छोटा सा गार्डन और अच्छा खासा मेंटेन गार्डन होता है, क्योंकि दे डोंट हैव उस केस में जो हमारी जो वॉल्स है उनको भी हमको पॉली रखना है कि उसमें हम we can be a mix of this. No, you will have to make it a poly house. You will have to allow the radiation, because when we are talking about greenhouse, you will have to allow the radiations to come inside it. Because अगर आप इसमें हीटर रखेंगे या कुछ और चीज़ रखेंगे, then it becomes a costly affair. So you will have to see that कि जो maximum radiation है उसके अंदर आए, उसके लिए जो आपको side है, they have to be made with a glazing material। उसकी जो कॉस्टिंग है, जो पॉली शीट्स की आपने यूनिवर्सिटी में कभी वो बहुत किया है, every so farmer wants that analysis costing and all that. No, we have that all, सब कुछ है हमारे पास ना। कोई भी आप, जैसे मैंने आपको दिखाया कितनी मटेरियल अवेलेबल है, so what is the best suited for your region,
आजकल saffron is being cultivated on rooftops. Indoor saffron की बात Indoor करें. saffron. They don't mean they need a close like a room like this. Yes. उनको open की जरूरत नहीं है उसमें. उनको open की जरूरत Open की जरूरत नहीं नहीं है. हालांकि जो आपके एक प्रोफेसर है जोर साहब, उन्होंने जो प्रोग्राम में किया है, he has kept a ventilation also for that because he feels he doesn't need that cold temperature as compared to outside. कश्मीर में वैसे ही ठंड होती है. Right. So he has made it semi, can't say just fully enclosed, but उसमें ventilation भी रखी. मैं वही कह Although the system is same hydroponic. He has used hydroponics for saffron. Saffron as well as mushkabuji. As well as mushkabuji, these two things, same person. Means on a small scale. I think he's in KVK. No, he is in agriculture Scientist department. है. जोर साहब. जोर साहब. उन्होंने वो दो चीजें उन्हें, but he is using rooftop for it, for both the things. No, we can do it. जैसे मैं बताऊंगा, this you are showing that यहाँ पे कई जगह पे कोई crop है, they are shade level. So we'll have to go for covering it with a shade net. यहाँ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे shade net है. यहाँ वहाँ पे वो screen So है. basically space हमारे पास कम होती है. तो the crop has to be high value. वो इसमें वो issue है. बस 1000, 1200, 1500 इतना ही space होगी. हाँ, तो उसमें फिर वो the value of the it should be obviously of the high value. costly. It should be costly crop. Like अभी तो उतने में से उतना वो benefit. सर लेकिन why would grow saffron poly house? वो तो open field में भी grow होता है. That's what that I will show you. I have kept a slide for that. I'll show you. Next. जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मुझे लगता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है कोई? आप लोग नहीं. अच्छा, सपोजिंग हमें ग्रीन हाउस है. अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमें कितना हीट चाहिए इसमें ना, कितने हीटर लगाने हैं हमें इन दिस. सो आइदर यू कैन गो फॉर सिंपल हीटर्स, वो यूज कर सकते हैं, या यू कैन गो फॉर सर्कुलेशन ऑफ हॉट वाटर, यू कैन गो फॉर सर्कुलेशन ऑफ स्टीम. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दैट. लाइक वी हैव कंडक्शन, जो हम नॉर्मली जो करते हैं, लाइक conduction है, what is the outside temperature, what is the inside temperature, and what is the area of that greenhouse, and what is the resistant offered. जैसे polythene film है, वो कितना resistant offer करता है radiations को बाहर जाने में, heat को बाहर जाने में. अगर आप glass की बात करेंगे, उसका R होता है ना resistance to heat, that is 0.15. अगर polythene की बात करेंगे, that is 1.15. अगर आप concrete की बात करेंगे, तो that is 2. So it will depend on many factors कि वॉल्यूम कितना है इस रूम का, सरफेस एरिया कितना है रूम का, कवरिंग किसकी है. उसी बेसिस पे ये सारी कैलकुलेशंस हम करते हैं कि हीट रिक्वायरमेंट हमें कितनी चाहिए किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में. But this involves energy. This involves energy. That's what I was saying to you earlier. कहीं मेरा पॉली हाउस है, वहाँ मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है नहीं. इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, it involves energy, it involves cost. उसके बाद आप ग्रो करेंगे उसमें हाक जो कि 40 रुपए में बिकेगा, तो that is a सोलर सिस्टम पे ये सब की एनर्जी सोलर इन ओवर एरियाज स्पेशली आप देखो, आप 4 दिन से धूप भी नहीं निकली, तो यूर सोलर सिस्टम डोंट वर्क अंडर सच कंडीशन. अगर आप लद्दाख में देखेंगे वहाँ पे बहुत अच्छा ये है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है. नेक्स्ट. सो दिस इज अगेन ना हीट लॉस जो हमें कैलकुलेट करनी है, पेरीमीटर हीट लॉस, रेडिएंट हीट लॉस. नेक्स्ट. तो जैसे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितनी चाहिए हमें, आई थिंक. नेक्स्ट. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट. लास्ट ईयर आई हैड बीन टू यूएसए, सो दे वर डूइंग द एक्सपेरिमेंट ऑन लेट्यूस. सो लेट्यूस वाज ग्रोन अंडर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. तो ये आप ऊपर देख रहे हो कैमरा, दिस इज अ हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा. तो नॉर्मली जो ये लेट्यूस ग्रो कर रहे थे, दे यूज्ड टू ग्रो इट इन 35 days. वहाँ पर हम दोनों मज़ो इस्तेम ऑफ क्रॉप तैयार गसान, वेल एस्टैब्लिश्ड क्रॉप ऑफ lettuce. तो this was not an experiment of growing lettuce, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं था बेसिकली. So they were actually calibrating the drone वहाँ पे चलता है बाहर, तो उसको ड्रोन को और इस हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा को वो आपस में ना कैलिब्रेट कर रहे थे. Like this hyper spectral camera, it takes 222 images. हर किसी वेवलेंथ पे एक इमेज देता है, और हर कोई इमेज हमें कुछ ना कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है अबाउट द प्लांट. लाइक उसका NDVI बताता है, उसका मॉइस्चर स्ट्रेस बताता है,
उसका डिजीज बताता है, मीन्स एवरी wavelength 220 wavelength they tell you something about that plant. So but in 35 days this, and they used to give these ना, उन्होंने ये भी स्टैंडर्डाइज किया है कि कितनी रेडिएशन इसको चाहिए, कौन सी वेवलेंथ इसको चाहिए और कितनी इंटेंसिटी इसको चाहिए, and for how many hours it needs it. Like they used to give 16 to 17 hours of light. It was a blue light standardized जिससे ये ग्रो कर रहा था. नेक्स्ट, जैसे हमने किया है एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे इसी का लेट्यूब सेम प्रॉब्लम. वन ऑफ माय स्टूडेंट्स डिड दिस एक्सपेरिमेंट. तो जब हम आउटसाइड में ग्रो करते हैं, व्हेन यू ग्रो इट आउटसाइड इट यूज्ड टू टेक 82 days. 82 days to grow. But when you used to grow it in greenhouse, it used to be 62 days. And this was the deep water culture. It is a hydroponic system. And this is the nutrient film technique. It used to take 71 days. Now, over 62 days and there 35 days. Those दो फर्क. How many days? 27 days. अभी भी हम 27 दिन उनसे पीछे हैं अभी. I don't know if people from vegetable science have done this kind of experiment, but still there is a lot of margin, the difference between it. Next. और ये हमारा एक्सपेरिमेंट था जो हमने किया ना अंदर ये. Now people are also talking about protected cultivation. मैं अपना स्कोप बता रहा हूँ. यहाँ पे आप यूरोप में बात कर रहे हैं वो grow under protected cultivation, like apple high density apple cultivation. अभी तो आपने सिंपल देखा है वहाँ पे ना वो लगे हुए हैं these trellis systems, लेकिन growing it in controlled, full controlled conditions. Next. तो ये अगर आपको हिस्ट्री के बारे में पता है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में शुरू हुआ था एंड इट वाज बेस्ड ऑन कॉटन. तो वो क्यों हुआ था उस टाइम पे? बिकॉज दे स्टार्टेड फैक्ट्री जहाँ पे कि जो फैब्रिक था वो प्रोसेस होता था. नाउ द सेम कंसेप्ट इज कमिंग इन एग्रीकल्चर. दिस इज अगेन वहाँ का फोटोग्राफ है. दे आर सेइंग दैट वी शुड हैव अ फैक्ट्री ऑफ ग्रोइंग लेट्यूस. We should have a factory of growing saffron. We should have a factory of growing tomatoes. क्यों हमें इतना लोग परेशान हैं बेचारे वहाँ यहाँ जा रहे हैं? Instead of doing this, we should have this concept. So because this is starting. ये पिक्चर है वहाँ की. They are telling that उसकी जो output होगा that should be greater than 500 metric tons. Building footprint should be 2000 meters square. And 5 levels of fertilization should be in that. Next. So ये यहाँ पे है. This is again apricot. Apricot under controlled atmospheric conditions. मतलब इसको हम क्योंकि we do all these things तो either crop हमारा पहले ही तैयार हो जाए या late तैयार हो जाए. That's why we talk about these structures. Off season availability. या अगर आप हमने experiment किया है इसके strawberry पे. So we got an advantage of 45 days as compared to outside conditions. Outside जब हम देखेंगे स्ट्रॉबेरी तैयार हो जाती है 7th of May, लेकिन जब हमने ग्रीन हाउस में किया under these conditions, protected conditions, 27th of March harvesting started. So that we got 45 days of advantage in that. और जब कोई चीज़ पहले तैयार हो जाती है या लेट तैयार हो जाती है उसकी रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. Increases the rate of that. Next. But what is the additional cost, of a structure? Like I showed you a greenhouse structure. when we compare it? Economics we have checked for that. It exactly means ना उसमें बैठ जाता है economics जो हम कर रहे हैं. We are not talking about those. Like the farmer will break even in 1 year, 2 years. 1 year he will break even. Just 1. If he will get the market, that is the prerequisite for that. So I was telling that ये कह रहा था क्यों हम करें? He said why we should do. तो इजराइल ये है, दिस इज अ स्टार्टअप वहाँ का है स्टार्टअप. सो दे आर सेइंग दैट हमारे यहाँ पे सैफरन क्रॉप साल में कितनी बारी होता है? एक बारी. दे आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू गेट 4 क्रॉप्स ऑफ सैफरन. 4 क्रॉप्स ऑफ सैफरन इन इंडिया. और हमारा जो फ्लावर होता है एक होगा, एक कॉम जो होता है ना उसका बालम जिसको कहते हैं एक होगा. इनके 4 5 है एक में. दैट इज बिकॉज दे हैव इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इन दिस. और ये इनका क्योंकि ईरान के साथ ये है, दे वांट टू टेक ईरान का जितना शेयर है मार्केट में ना सैफरन का,
इनका ऑब्जेक्टिव वही है कि उनका सारा सैफरन बेटर क्वालिटी का हम ग्रो करेंगे और उनका जो इंडस्ट्री है वो सारी बिठा देंगे। क्वालिटी ऑफ saffron. They will give the quality. Is it same? It is quality is basically the parameters we have in that. Quality means So the Kashmiri taste of saffron or saffron. मैं वही कह रहा हूँ, फर्क किस हिसाब से कह रहे हैं? बोलने से मेरे से नहीं ना चलेगा। Yes, sir. You will have to see what are the उसमें क्रोसिन होता है, पिकोक्रोसिन होता है, पिकोक्रोसिन होता है, पिकोक्रोसिन है, वो आपको देखना है। अगर उसमें ज्यादा होगा, Yes, sir. वो तो लैब में पता लगेगा। हाँ। मेरे कहने से आपके कहने से नहीं ना होगा। it must have been tested. It will be For that the GI tag They say that whatever they have, our quality is better than what Iran is producing. ये जो industry है, that is $1 billion industry. ईरान ने भी शुरू किया है। इस लेवल पे तो नहीं पहुंचे। अभी मैं एक्सक्यूज मी सर, अभी मेरा दोस्त बोल रहा था कि डॉक्टर ज़हूर के बारे में कि उन्होंने वहाँ पे वो मुश्किल बुद्धिया किया था। आमतौर पर पता है कि अगर हम पैडी करते हैं तो एक कनाल में हमें दो या 3 या 3.5 का 4 कनाल का निकलता है, लेकिन उसने 4 क्वांटल। तो अगर हम उसमें देखेंगे मुश्किल बुद्धि, उसने वहाँ पे इसका ये निकाला कि 5.5 क्वांटल उसको निकलता है पर कनाल के हिसाब से, जो उसने वहाँ पे प्रोटेक्ट कंडीशन में ऊपर किया था उसमें। So that is the advantage. दैट्स द एडवांटेज, जबकि उसकी है 1 से 2 क्वांटल टोटल प्रोडक्शन। प्रोटेक्टेड कंडीशन में एज सच ही जो एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं ना, जो भी एक्सप्रेशन होता है वो जीन ई इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल। जेनेटिक्स और Genetics, हाँ, जब हम एनवायरनमेंट को इंप्रूव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। और पोटेंशियल होता है ना, हर किसी चीज का पोटेंशियल है। जैसे हम बोलेंगे SR4 वैरायटी है यहाँ की यूनिवर्सिटी की राइस की, तो हम बोलते हैं उसका जो पोटेंशियल है दैट इज 15 टन्स पर हेक्टेयर। लेकिन जब हम अपने फार्म में लगाते हैं तो 10 टन ही आ जाता है। जब जमींदार लगाता है बोलता है मेरे पास 5 ही टन है। तो देयर इज सम, कहीं पे जो एनवायरनमेंट है वो सही नहीं बैठता उसमें। This is all CA they are doing under control conditions. This is all under control conditions, but they have standardized the different stages. जैसे स्टेज पे जैसे हम बोलते हैं कि इसको 100 घंटे कूलिंग पीरियड चाहिए सैफरन को, दे गिव इट दैट टाइम। 2 डिग्री चाहिए, वो ये -2। कर रहे हैं, वो तो बाकी लोग भी कर सकते हैं ना। Everybody can do it, but it's not easy. ऐसे कोई टेक्नोलॉजी है कि इनका पेटेंट है। Like I will show you next. बाकी आज के डेट में हमारे जो ग्रीन हाउस वगैरह वो तो चलो इन्हीं से लेना पड़ता है, अदरवाइज बाकी तो I will show you the next. ये देखो ये बैक नेक्स्ट, ये पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ही इज ग्रोइंग सैफरन इन पुणे। कंटेनर उसने बनाया, इतना बड़ा कंटेनर है, वहाँ पे वो ग्रो कर रहा है। उसका क्लाइमेट ही इसने किया है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, क्रिटिकल टेम्परेचर इसने मेंटेन किया, ह्यूमिडिटी मेंटेन की, लाइट इंटेंसिटी मेंटेन की, ये चीजें इसने किया है। ही इज ग्रोइंग सैफरन इन पुणे। बट जो हम कश्मीर में ग्रो कर रहे हैं, जो लोग साहब ने ग्रो किया, उनको ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। पर मैं वही कह रहा हूँ, हमारा एडवांटेज तो है क्लाइमेट। जैसे उसको 1000 चिलिंग ओवर्स चाहिए, तो ही इज गोइंग टू गिव दैट चिलिंग ओवर्स, इसमें वो दे सकता है वो। सो ये आर्टिफिशियली इल्यूमिनेटेड है ना सारा। हाँ, अंडर उसने ऐसे ही ना एक वो शिप वाले वो होते हैं कंटेनर, वो लिया है उसने, उसको मेंटेन किया है किसी तरीके से। Listeners, India must there are huge number of containers which are waste. उसी को यूज किया, उन्हीं से यूज कर रहे हैं। दे हैव यूज्ड इट। This is important but it is waste. और मैं भी लुधियाना गया, तो वहाँ पे मुझे किसी को ना सैफरन देना था, वहाँ पे यही था। जैसे हमारा 7-Eleven है ना, वो मार्केट, वो क्या बोलते हैं, प्रोविजनल स्टोर, तो मैंने उसको बोला सैफरन दे दो मुझे, और इंसिडेंटली वो इसी का निकला। उस पे लिखा था मैन्युफैक्चर्ड इन पुणे, और यहाँ पे एक Bulk with him are from Kashmir. दे विल बी फ्रॉम कश्मीर, Bulk दे विल बी फ्रॉम कश्मीर। और हमारा 1 ग्राम कितने का है सैफरन यहाँ पे? तो लेकिन बाप कश्मीर का बड़ा अगर होगा वो तो कश्मीर का ही सैफरन देगा ना, थोड़ी ना। सैफरन तो लेगा कश्मीर का ही, but growth soil is grow एनवायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट हो तो उसकी क्वालिटी भी चेंज। अब वो बोल रहा है कि ये पुणे में बना है और बेच रहा है। जैसे हम 1 ग्राम कितने का पीते हैं? 1 ग्राम ना ग्राम 200 समथिंग। 200, उसने 120 रुपए में किया। 120 रुपीज ही वाज सेलिंग इन अ सुपरमार्केट, 120 के लिए वो मल्टीप्लिकेशन बहुत करता है। बिकॉज ही वांटेड टू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग। ये हमारा सैफरन स्टेशन है, जैसे वो इंडोर ग्रो कर रहे हैं सैफरन, इंस्टेड ऑफ कवरिंग ए ह्यूज एरिया, हैव ए वर्टिकल काइंड ऑफ अ सिस्टम, वहीं पे क्लोजली ग्रो करो सैफरन, यू जस्ट नीड बल्ब्स फॉर इट, तो वहाँ पे वो ग्रो हो रहा है। यही चीज हम एक ग्रीन हाउस में कर सकते हैं।
ग्रीन हाउस में एक्सपेरिमेंट rodents का बड़ा खतरा होता है वो मैं कह रहा हूँ ग्रीन हाउस में जो है कि हमने एक्सपेरिमेंट किए ग्रीन हाउस में, बट इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट हैज सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है इसकी ना सैफरन। नेक्स्ट आप जाइए। जैसे ये मेरी स्टूडेंट थी पीएचडी की, तो इसने ही डेवलप्ड ए मशीन, वी कॉल इट अर्बन सैफरन ग्रोइंग सिस्टम। इसको जस्ट लास्ट मंथ इसको ये भी मिला पेटेंट ना इस टेक्नोलॉजी को, हाउ टू ग्रो सैफरन अंडर वर्टिकल कंडीशंस। तो दिस इज अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें हुई, नेक्स्ट जैसे कॉम मल्टीप्लिकेशन है, कॉम मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज डन सॉइल में। So we are able to get the result. First time we got COM multiplication inside protected conditions. और अगर आप देखोगे ना ये COM, आप देखो अगर COM आपका 10 ग्राम से छोटा है उसकी वैल्यू नहीं होती है, as it increases the weight or size तब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और इसके जितने भी हमें COMs में डेवलप हुए they were all more than 12 grams। बड़े बड़े COMs हमें इसमें मिले अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशन। तो प्रोटेक्ट क्या किया हमने इसको, we gave it the right temperature, we gave it the right humidity, we gave it the right light intensity, so we were able to do this experiment and in this machine. Next. So this is a blueberry farm we have seen in Muzaffarnagar. So it's a big farm, वहाँ पे है। So they are growing these blueberries under these protected conditions. एक एक ट्री से 5 किलो वो ले रहे हैं अंडर पॉटेड प्लांट्स। दिस इज अदरवाइज है बैरन लैंड, कोई यूज नहीं था इस लैंड का। जब उस लैंड को उन्होंने अंडर प्रोडक्शन लिया एंड दे डेवलप्ड इट एंड दे आर ऑल एक्सपोर्टिंग इनटू कोरिया एंड डिफरेंट कंट्रीज। और वो इसका नाम क्या था मैम इस कंपनी का, वो पान मसाला वो जो बनाते हैं KMD के पता नहीं क्या था, BLC and they have invested 300 crores for this project। 300 करोड़ इन्होंने इसको बनाने के लिए लगा है। एंड जब कॉर्पोरेट कहीं जगह पैसे लगाता है they have to get it back। जेवा लागी था ये का बिजनेसमैन लागी तेम शिपाई में 3 करोड़ वापस आने। so they have invested in this technology। और इन्होंने पहले देखा था कि क्या डिमांड है इस क्रॉप की, ब्लूबेरी कहाँ पे डिमांड है, कितना उनको चाहिए, तब जाके उन्होंने 300 करोड़ इन्वेस्ट किया। बिकॉज इवन स्पेंडिंग ए रुपी इज सच रिस्की। ये जो आप जाएंगे यहाँ निशाद नर्सरी है, यहाँ पे है जस्ट 2 नर्सरी। ये दिसंबर की फोटो है। अगर आप देखोगे इसने वहाँ पे ये गैस हीटर भी यूज कर रहा है, ये बुखारी है, इसको बुखारी यूज कर रहा है फॉर ग्रोइंग दी सीडलिंग्स। और अच्छा खासा मार्केट है इसका फॉर सेलिंग दीज क्रॉप्स। ही सेलिंग ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, कोई भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसके पास जाओगे आपको वो क्रॉप मिल जाएगा, सीडलिंग ट्री कोई भी चाहिए। एंड ही इज डूइंग दिस एज ए बिजनेस। और ये दिसंबर की फोटो है। नेक्स्ट। तो दिस इज इन लद्दाख, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी है। आई थिंक विल स्किप दिस। दिस इज अनदर टेक्नोलॉजी दैट हीट एक्सचेंजर्स, बिकॉज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी दैट जो जमीन के नीचे हीट है, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इट ऑन द सरफेस, और इससे भी 2-3 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क पड़ जाता है। जैसे ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है, 10-12 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क पड़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस। अगर हम इसको इसके साथ क्लब करेंगे तो इट मीन्स अनदर 2-3 डिग्री। यहाँ पे ग्लास यूज हुआ नीचे वाली, वहाँ पे ग्लास है, बट एट द इवनिंग वो उसको ना बंद कर देते हैं विद द कवर, सो दैट द हीट बाहर ना चली जाए। सो दैट इज द रीजन फॉर दैट। नेक्स्ट। So in the end, I think it is the future of agriculture. As I said, that it has a lot of, not only in, जैसे मैंने आपको example दी that we have been able to construct so many greenhouses at our place. बहुत इसका potential है, not only in terms of fabrication of greenhouses, but also taking it as a, जैसे growing of crops, जैसे blueberry की example मैंने दी, या saffron की example मैंने दी। So that way also you have a lot of potential that you will be able to do this। और इसमें टेक्नोलॉजी लानी बहुत ज़रूरी है, जैसे AI, ML है,
अभी हम इस सब चीज़ों में we don't have that much of knowledge, but we will have to bring that technology in it. And design and development, like orientation, what should be there, all those things matter a lot in all this. और potential तो है ही है इसका. And I think for budding entrepreneurs, it is a very good option if they take it as a profession. उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है. Next, that's it.